Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Miss Nargis here from Guards Public School 1. Welcome you in lecture number 5 of Social Studies for class 6. Chapter number 3. Section History. Topic Early Pakistan. Early Pakistan. Student, in this chapter we will study the following topics: introduction of the Indus Valley civilization, discovery of Moen-jo-Daro, culture and lifestyle of Moen-jo-Daro, building system of Moen-jo-Daro, objects found from the ruins, and end of the civilization. Introduction to Indus Valley civilization. Students, you all might have heard or read about the fascinating, mysterious places of the world. आज हम आपको एक ऐसी ही प्लेस के बारे में बताएंगे, the amazing historical place of the subcontinent, especially the great city of Mohenjo-daro. Before going to give you information about Indus Valley civilization, students, you must know what does civilization mean. Civilization means society, culture, and the way of living of a particular place. Introduction of Indus Valley civilization. Now students, look at the map. This map shows the area of Indus Valley civilization. About 4,500 years ago, in 7000 BCE, the Great Indus Valley was settled here. आप देख सकते हैं ये शेडेड एरिया जो है वो शो कर रहा है इंडस वैली के पूरे इलाके को। दरिया इंडस के ये दोनों अतराफ ये सिविलाइजेशन आबाद थी। मोहनजोदड़ो सिटी दरिया के राइट बैंक पर आबाद थी और हड़प्पा शहर दरियाए रावी के करीब आबाद था। ये सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्ट एशिया से लेकर इंडस रिवर का पूरा इलाका और गंगा जमुना तक फैली हुई थी। अब इंडस रिवर का ये इलाका पाकिस्तान है। इसके अलावा मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बुलान पास के करीब वाक़या है। यहाँ से भी इस तहज़ीब के आसार डिस्कवर हुए हैं। The original inhabitants of this area were Dravidians और ब्राह्मी जो है वो रिसर्च से पता चला है सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यही द्रविडियंस की लैंग्वेज से मिलती जुलती लैंग्वेज है। मुख्तलिफ़ अदवार में खैबर पास और बुलान पास के रास्ते यहाँ पे इन्वेडर्स आते रहे और अटैक करते रहे। आप मैप में देख सकते हैं खैबर पास भी शो की गई है। आर्यंस वर द फर्स्ट पीपल हु केम हियर इन 1500 BC फ्रॉम खैबर पास। आर्यंस को ये जगह बहुत ही अट्रैक्ट की क्योंकि वो ड्राई लैंड से आए थे, उनका सेंट्रल एशिया ड्राई था और ये एरिया यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर, फार्म लैंड्स और फॉरेस्ट थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमों और मुख्तलिफ़ रेसेस से ताल्लुक़ रखने वाले इन्वेडर्स ने भी हमले किए। कुछ यहाँ के लोगों को ग़ुलाम बना के ले गए और कुछ इन्वेडर्स यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के ट्रेजर के लिए आए और कुछ कॉन्कर्स यहीं सेटल हो गए, स्पेशली ये इलाका जो अब पाकिस्तान है। यही वजह है कि पाकिस्तान हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर एंड कस्टम्स, क्योंकि ये इन्वेडर्स डिफरेंट ज़बानों और कौमों से ताल्लुक़ रखते थे तो उन्होंने यहाँ के असल कल्चर और कस्टम्स पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। Introduction of Indus Valley civilization. Now students, here you have some important points about the civilization which we have already discussed in the previous slide. So watch it carefully and remember these points. Discovery of Mohenjo-Daro 1920.
Mohenjo-Daro, Mount of the Dead, one of the oldest cities in the world, discovered in 1920 under supervision of Sir John Marshall. Mohenjo-Daro located at 27 km on the right bank of river Indus, Sindh, Pakistan. Mohenjo-Daro divided into two districts, Citadel and Lower Town. Harappa is situated at 24 km from Sahiwal near river Ravi, Punjab. Assignment number 1. Now students, it's homework time. You have 5 one-word answer, very easy, and 4 short question answer. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको एटलीस्ट 2 लाइन्स या 1.5 लाइन्स का आंसर होना चाहिए. वॉच कीजिए केयरफुली. Lifestyle and culture of Mohenjo-Daro. They were mainly farmers, grew cotton, barley and lentils. Carts were used for transport. They worshipped animals and ruled by the priests. Lifestyle and culture of Mohenjo-Daro. No concept of money because no coin have been found. Traders would travel far and wide on business tours. They wore long loose robes. Women used jewelry of gold, silver and ivory. Features of the Harappan Civilization Part 1. Cities of the Indus Valley. Mohenjo-Daro, Harappa. The cities of the Indus Valley were well-developed urban centers. The buildings were sturdy and made of burnt brick and stone. Evidence of town buildings like granaries, warehouse and brick walls suggests a great deal of architectural planning and efficiency. Town planning. The Indus Valley people built their cities with proper planning and according to a set pattern. A typical city could house about 40,000 people. You can see Great Bath. The city was generally divided into two sections, the upper town called the Citadel and the lower town. In the middle is Great Bath. The citadel was usually based on a mount or at an elevated position. It was possibly occupied by the member of the ruling class, priests. Below the citadel lay a lower town containing brick houses which were inhabited by common people. Drainage system. The drainage system was so well planned that it could be compared with that of any modern city. Drains were built alongside the roads. Kitchen and bathrooms had drains
which were connected to the street drains. These drains were covered with bricks and sometimes with stone slabs. The drainage system of Harappa is very unique, which indicates that Harappan paid a good deal of attention to health and cleanliness. City plan of Mohenjo-Daro. मोहनजोदड़ो शहर के लोग उस दौर की 3 बड़ी तहजीबों में सबसे ज़्यादा तहजीब याफ्ता कौम थी। शहर को बहुत ही अच्छे मंसूबे के तहत तामीर किया गया था। सड़कें, गलियां और घर तामीर किए गए थे। गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियां थीं और साफ़ पीने के पानी के लिए 700 पानी के कुएं और एक बड़ा कुआं था। घर सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी थे और ऊपर के हिस्से में कमरे होते थे। सिटी प्लान ऑफ मोहनजोदड़ो। अमीर लोगों के घरों के साथ अटैच वॉशरूम और सर्वेंट क्वार्टर भी होते थे और अटैच वॉशरूम का फ्लोर वाटरप्रूफ एक किस्म का तार केमिकल उसको इस्तेमाल किया गया था। और इसके अलावा एक बड़ा हॉल भी दरियाफ्त हुआ है जो कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है। किसी महल के आसार यहाँ से दरियाफ्त नहीं हुए। इसका मतलब कि यहाँ पुजारी ही रूलिंग करते थे। अनाज के लिए महफूज रखने के लिए बड़े बड़े अनाज के गोदाम भी दरियाफ्त हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि उस दौर में दुनिया में तीन बड़ी तहजीबें फ्लरिश थीं। मिस्र में दरियाए नील के पास एक सिविलाइजेशन और इराक़ में दजला और फ़रात के किनारे सिविलाइजेशन थी और चाइना में। लेकिन उन तमाम तहजीबों में मोहनजोदड़ो के लोग बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद और बहुत ज़्यादा अमन पसंद लोग थे। Great Bath of Mohenjo-Daro. The city had a great central bath with steps leading to it. It is 12 meter long and 7 meter wide, used for religious purpose. At the back of the pool are small rooms for the priest. It was a part of temple. People use it for religious ceremonies. Students, as you can see in the pictures, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद बात है और जो डिस्कवर हुआ है और उस दौर की दूसरी सिविलाइजेशन में ऐसा बात कहीं नहीं मिलता। ये एक सेंट्रल बात था और रिलीजियस यानी कि मज़हबी रसूमात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थीं और जो है मज़हबी त्योहारों में या मज़हबी रसूमात से पहले टेंपल में दाखिल होने से पहले आवाम लोग इसमें बात लेते थे और फिर टेंपल में दाखिल होते थे। प्रीस्ट यानी कि पुजारियों के लिए यहाँ इस बात के पीछे ही इस पूल के पीछे रूम्स बने हुए थे और वो पुजारियों के लिए थे। Objects found from the ruins of Mohenjo-Daro. Students, you can see some interesting objects pictures, and these objects are also kept in the museum of Mohenjo-Daro. The very important and interesting metal statue of dancing girl, some broken piece of pottery, a model of bullock cart, clay toys, and also mysterious clay taps. It means the traders of Mohenjo-Daro यूज़ करते थे ये टैब्स एज अ मार्क और हर ट्रेडर का एक अपना अलग मार्क होता था क्योंकि यहाँ से डिफरेंट इसी तरह के टैब्स विद डिफरेंट एनिमल्स पिक्चर्स डिस्कवर हुए हैं। लाइक ये इसी तरह होगा जैसे आजकल हर कंपनी अपना एक लोगो रखती है। बिल्कुल उस वक्त के भी ये जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना अलग लोगो रखा होगा और
इन टैब्स पर जो राइटिंग है उसको पढ़ने वाला अनफॉर्चुनेटली अब कोई नहीं है। अगर हाँ उनको इस राइटिंग को पढ़ सकते तो हम इस सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। एक और बहुत अहम चीज़ जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑब्ज़र्व की कि इस पूरी सिविलाइजेशन में कहीं भी उन्हें कोई हथियार नहीं, वेपन्स नहीं मिले। इट मीन्स ये बहुत ही काम लोग थे और वॉरियर नहीं थे। Assignment number 2. Now student, it's homework time. You have long questions, 3 long questions, and in question number 1 and 2 you have to write 5 points, and in question number 3 you have to write 3 to 4 lines answer. I hope carefully watch your video so you will get answers easily. End of the civilization. Nobody knows how this great civilization came to an end. Since 1920 till date, archaeologists is still in search of the real cause. But from the observation of ruins, archaeologists have assumed that some causes might be happened. Raided from the north, destroyed by some massive earthquake or other natural calamity. Some diseases wiped out the civilization, or they merged into other civilization. People moved to some other nearby lands. Review of today's lecture. Climatic change. We have completed the following topics in this chapter. This great civilization was vanished. Number 1. The ancient Indus Valley civilization. That discovery of Moen-jo-Daro had done lifestyle and culture of Moen-jo-Daro. End of the civilization. Object found from the ruins of Moen-jo-Daro. Assignment number 3. Student, very easy. You have blanks और इसमें आपको words दिए हुए हैं. You have to write the suitable words in the blanks. Okay, do your homework carefully. Now time is up students. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.